Now it's time to go one more step ahead. And going one more step ahead, we want to talk about probably what is the DQ implementation. What is DQ? The DQ, आप लोगों ने जावा में क्लास देखा था उस दिन, क्लास का नाम कुछ तो था array DQ. So what is that DQ is? That DQ simply stands for, DQ stands for double ended queue. A DQ stands for double ended queue. And why it is called a double ended queue? Because the values can be added, it can be added or can be deleted from the front end as well as rear end. Values can be added or deleted from the front end as well as rear end. And when you talk about it, like you say double ended queue. And the most common implementation of double ended queue is implemented using doubly linked list with head and tail pointer. So why head and tail pointer, you will automatically understand. So if you want to perform the operations, now there are two operations that you can perform. One operation, you can say that push from, let's say that push, let's say at front end, or like a push, let's say back end. Push back, I'm talking about this end, and push front, I'm talking about this end. To push back, can you please tell me, if I want to add a node at the end of the linked list, what will be the time complexity with the current scenario? हमारे पास head pointer भी है, हमारे पास tail pointer भी है. If I'm trying to add one more element, what will be the time complexity? Yes, adding an element at the end, the time complexity will be O of 1. Absolutely correct. What about adding an element at the start? What about adding an element at the start? Oh yes, adding an element at the start, you find that again time complexity will be O1. So यहाँ पर it is addition from both the ends, tail end as well as the head end. Like there. What about popping the elements? Oh, when it comes to popping the elements, so again there will be two functions. You will be popping from the front end, and you can also pop from the back end, or you say rear end, whatever. So now if you try to delete from the front end, what is the time complexity? Yes, it is still O of 1. Del first ka time complexity O of 1. And what is the del last ka time complexity? In the doubly linked list, in a doubly linked list, it will be O of 1. अगर आप लोग singly linked list करते हो, it will not really remain O of 1. अगर आप लोग singly linked list के लिए जाओगे, आपको traverse करना पड़ेगा. And that is the reason I said that DQ implementation, the most common technique is that people prefer to go with doubly linked list with head and tail pointer, या फिर doubly circular linked list, so that your time complexity of addition and deletion remains O1. Addition and deletion remains O1, and that is called a double-ended queue. सर ये डबल एंडेड क्यू कहाँ पर यूज होते हैं? These are the application specific queues. So main queue जो होते हैं वो आपका linear queue या circular queue होता है, but this is a special queue, application specific queue. Option is made available. अब आपको कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर यूज करना है, वो आप लोग डिसाइड कर लो. डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन यू कैन चूज दैट कि मुझको DQ यूज करना चाहिए, कौन सा यूज करना चाहिए. टिपिकली कभी आप लोग अगर इसके अंदर जाते हो, व्हाट आई कैन से दैट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फिर LRU एल्गोरिथम. सो ऐसे केस में बहुत बार ऐसे होता है कि आपको कभी कभी स्टार्ट में भी ऐड करना पड़ता है, कभी कभी एंड में भी ऐड करना पड़ता है. सो ऐसे केसेस में डबल एंडेड क्यूज आर एक्चुअली प्रिफर्ड. इवन द मैसेज क्यू जो मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल दिया था, वहां पर अगर आपका मैसेज हाई प्रायोरिटी का मैसेज है, यू माइट वांट टू ऐड एट द स्टार्ट. अगर लो प्रायोरिटी का मैसेज है, यू माइट वांट टू ऐड इट एट द एंड. तो यहाँ पर मुझको एडिशन दोनों एंड से सपोर्ट चाहिए. एट दैट टाइम पीपल प्रिफर यूजिंग डबल एंडेड क्यू. आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल एप्लीकेशंस कि डबल एंडेड क्यू कहाँ पर यूज होते हैं. लेट मी जस्ट यूज इट ओवर हियर. मैं लिखता हूँ. सो एप्लीकेशंस, a best application that I have seen is message queues. Message queue typically in real time operating system. And then in this particular case, आपके जो messages है, the messages add कहाँ पर होंगे? Messages are added in the queue. Messages are added into the queue. So like a message queue,
It's a queue of messages that is usually created by using a linked list mechanism. It's a queue of a messages that is typically created using a linked list mechanism. So doubly linked list mechanism. The message queue in operating system is made like this. And then how do you add the element? It depends on the priority of messages. If your message is like a normal priority, and if the message is of like a urgent priority, if I say that this is the head end, and if I say that this is tail end, this is tail end, then you'll find that if the message is kind of a normal message, the normal message is always added at the start. No, sorry, my mistake. If it is a normal message, the normal message is always added at the end. And if it is an urgent message, the urgent message is always added at the beginning. So अब मैं आर्टोस जब पढ़ाता हूँ तो आर्टोस के अंदर हम लोग दो टाइप के मैसेजेस लिखते हैं. एक लिखते हैं क्यू अंडरस्कोर अर्जेंट मैसेज और एक लिखते हैं क्यू अंडरस्कोर नॉर्मल मैसेज. So if it is a normal message, it always goes at the end of the queue, and it is like a normal. If it is a urgent message, it is always prepended. So it is always at the beginning of the queue. I'm just trying to tell you the application. Usually लोग मुझको पूछते रहते हैं सर डी क्यू कहाँ पर यूज होता है. हमने कभी यूज नहीं किया. आपने कभी यूज नहीं किया वो बात अलग है, बट मैंने भी कभी यूज नहीं किया. बट दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन दैट आई हैव सीन इनटू द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. तो एग्जांपल मैंने बताया कि वेयर डी क्यू स्पेसिफिकली कैन बी यूज्ड. एंड देन तो इसका इंप्लीमेंटेशन मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ. दैट समथिंग यू कैन डू इट, क्योंकि हमारा ऑलरेडी डब्ल्यू लिंक लिस्ट पढ़ के हो चुका है. सो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में एड फर्स्ट भी आपको आता है, एडलास भी आता है, डेल्फस भी आता है, डेल्लास भी आता है. सो दैट कैन बी टेकन एट एज असाइनमेंट. सिर्फ ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट में एक छोटा सा एक्स्ट्रा बात है. एक्स्ट्रा बात ये है कि ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट आपको यूजिंग हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर बनाना है. ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट आपको हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर बनाना है. सो अगेन इट कैन बी टेकन एज अ योर पेपर वर्क करो, खुद से लॉजिक लगाओ. सारे फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको चार ही लिखने हैं. चार ही फंक्शन लिखने हैं. कौन कौन से? एड फर्स्ट, एड लास्ट, डेल फर्स्ट एंड डेल लास्ट. दीज आर फोर फंक्शंस. आप लोग चाहो तो एमटी का एक एक्स्ट्रा फंक्शन लिख सकते हो, एंड दैट इज समथिंग यू कैन कॉल इट एज अ डी क्यू, double ended queue. Going ahead, and the last one, we have got some priority queue. What is the priority queue? The priority queue is one where we can say that the elements are added in priority queue. Elements with the highest priority is removed first. So very first and very important thing, you need to understand that priority queue is not a first in first out queue. So this is deviating from its normal behavior. So जब हम लोग यूजुअली क्यू कहते हैं, क्यू को हम लोग हमेशा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं. मैं आपको बता रहा हूँ, प्रायोरिटी क्यू ये आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू नहीं है. प्रायोरिटी क्यू ये आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू नहीं है. प्रायोरिटी क्यू आपका कैसा क्यू है? ये कैसा वाला क्यू है? इट इज नॉट अ फर्स्ट इन फर्स्ट, इट इज गोइंग एज पर द प्रायोरिटी. तो सर इंटरनली क्या होता है? इंटरनली इंटरनली elements elements are stored in sorted manner. I hope you are getting my point. The elements are stored in a sorted manner, and when the elements are stored in a sorted manner, at that time the element with the highest priority can come out first. Element with the highest priority come out first. So sir, how it can be implemented? It can be implemented in a various way. So can be implemented in a variety of ways. Obviously इसकी time complexity भी आप लोग ओवन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है. Can be implemented one of the following ways. Number one way you can follow that using array. और अगर आप इसको यूजिंग array कर रहे हो, then please use insertion logic. इंसर्शन लॉजिक जो हम लोगों ने इंसर्शन सॉर्ट के वक्त पढ़ा था, आपको याद आया? इंसर्शन लॉजिक, क्योंकि जो जैसे जैसे एवरी टाइम यू आर पुशिंग एलिमेंट, पुट इट एट द राइट पोजीशन, डू नॉट पुट इट एट द एंड. उसकी जगह ढूंढो और उसके हिसाब से उसको पुश करो. बचे हुए सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करते जाओ, बचे हुए सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करते जाओ. दैट इज काइंड ऑफ अ टेक्निक दैट यू कैन यूज इट. सो यूजिंग एरे अगर आप लोग कर रहे हो, यूज इंसर्शन लॉजिक. द सेकंड पॉसिबिलिटी इज दैट अगेन you can do it by using linked list also. Using linked list also, to be frank, you need to still follow the logic of like a insertion logic. Every time you are inserting element, every time you are inserting element, you need to find out the appropriate position, and then you need to add the element.
सो जब भी ऐड करोगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स आर, लेट्स से आर समथिंग लाइक दिस, द 5 9 6 2, these are the elements that I want to add it into the queue. तो अगर मैं इसको एज ए लिंक लिस्ट करके बना रहा हूँ, दिस इज व्हाट द एलिमेंट्स टू बी एडेड इनटू द क्यू वन बाय वन, ये मेरी रिक्वायरमेंट है. तो हाउ डू ऐड द एलिमेंट? ऑब्वियसली यू स्टार्ट योर लिंक लिस्ट विद हेड, ये पहला एलिमेंट ऐड होगा 5, लेट इट बी 5, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो दूसरा एलिमेंट ऐड होगा इट विल बी 9, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट हैज टू गो आफ्टर 5. बट व्हेन टाइम कम्स कि मुझको 6 ऐड करना है, a moment time comes मुझको 6 ऐड करना है, you need to add 6 in between 5 and 9. So 6 should be added in between 5 and 9. अब ये आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा. You need to traverse the list, and while traversing the list आपको ढूंढना पड़ेगा where you find a number greater than that, and then you need to add the element in between. ये काम करने के लिए आप लोग वो दो पॉइंटर वाला लॉजिक यूज कर सकते हो, टेम्प और ट्रैवल लॉजिक. सो टेम्प और ट्रैवल लॉजिक, एंड देन मोमेंट यू फाइंड दैट यू गेट अ नंबर ग्रेटर देन दैट, आप लोग दोनों के बीच में उस एलिमेंट को ऐड कर सकते हो. एंड इफ यू वांट टू ऐड 2, if you want to add 2, how do I add 2? So 2, I need to simply add it probably at the beginning, and then you will find that the list will be arranged like this. List will be arranged like this. So जब आप लोग ये वाले एलिमेंट्स क्यू में ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, ये वाले एलिमेंट क्यू में ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, ऑन एवरी पुश you are finding the appropriate position and then you are inserting the element. Can you please tell me, अगर आप लोग इसको फॉलो कर रहे हो, if you are following this technique, then what would be the time complexity of a push? पुश का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? अगर आप लोग ये वाला लॉजिक यूज कर रहे हो तो पुश का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? अब आपको हर बार ट्रैवर्स करना पड़ेगा, उसका सही जगह ढूंढना पड़ेगा और बाद में एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा. सो ऑब्वियसली ऑन एन एवरेज इट विल बी ओ ऑफ एन, on an average it will be O of n. But what will be the time complexity of pop in this case? A pop मतलब क्या करोगे? Every time while you are popping, you have to pop the element which is at the beginning. Oh, that is pretty simple. So this time complexity would be probably O of 1. So that is good. तो सर ये अच्छा है बुरा है? वैसे देखा जाए तो अच्छा ही है. So एक आपको O1 मिल रहा है, लेकिन एक आपको ON मिल रहा है. There's one more way that can be implemented. प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंट करने का एक और तरीका. So this is implemented using something called as a heap data structure. Another implementation is using heap data structure. What is heap? अभी मैं डायरेक्टली जंप नहीं करूंगा क्योंकि heap समझने के लिए पहले आपको ट्री आना चाहिए. Heap is nothing but we say that it is representation array representation of binary tree. It is an array representation of a binary tree. तो जब तक आपको ट्री नहीं आता है तब तक मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूं. बट एनीवे यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट इन दिस पर्टिकुलर केस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी, pushing time complexity will be O of log n, and even popping time complexity will be O of log n. So can you please tell me, out of this implementation, which implementation is most efficient one? इसमें से कौन सा इंप्लीमेंटेशन सबसे ज्यादा एफिशिएंट है? मैं पूरा इंप्लीमेंट, मैं सिर्फ पुश और सिर्फ पॉप की बात नहीं कर रहा हूं. आई एम आस्किंग यू कि अब जो मैंने आपको इंप्लीमेंटेशन बताया, एक दो तीन पॉसिबिलिटीज है. पहले और दूसरे का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिमेन सेम, पहले और दूसरे का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिमेन सेम. यस, यू ऑलवेज फाइंड दैट दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग इट. वैसे मैं आपको ये बता दूं, इनसाइड इन जावा देयर इज अ रेडीमेड प्रायोरिटी क्यू इज अवेलेबल. डू यू नो दैट? जावा के डॉक्यूमेंटेशन में आप लोग जाके चेक करते हो, जावा के डॉक्यूमेंटेशन में प्रायोरिटी क्यू, ये प्रायोरिटी क्यू जावा, there's a ready-made documentation available. Yes, let me go to the documentation, take a look at the documentation, and it is trying to tell me something. Can you read this? Hello, it has been written in a documentation. मैं बात कर रहा हूँ प्रायोरिटी क्यू की, मैं बात कर रहा हूँ प्रायोरिटी क्यू की. इट इज अ रेडीमेड क्लास अवेलेबल एंड इट इज वेरी क्लियरली रिटन देयर. व्हाट इट इज सेइंग? इट इज सेइंग दैट दिस इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड ओ ऑफ लॉग एन. तो कोई मुझको बताएगा ये इंटरनली क्या यूज कर रहा है? इंटरनली क्या यूज कर रहा है? यस, इट इज इंटरनली यूजिंग द हीप डेटा स्ट्रक्चर.
It is internally using the heap data structure. That is something that I'm trying to tell you. But at the same time, you need to understand that अगर आप लोग अगर आप लोग इसको कर रहे हो, यूज कर रहे हो, ऑफर एंड पोल एंड लाइक रिमूव, देन दीज मेथड्स विल हैव दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. लेकिन अगर वो लोग कंटेंट्स मेथड यूज कर रहे हो, कंटेंट्स मेथड चेक कर रहे हो, सो कंटेंट्स मेथड में जो चेकिंग होता है, दैट चेकिंग इज लीनियर. ए लीनियर का मतलब क्या? कंटेंट्स मेथड जो चेकिंग होता है, दैट चेकिंग इज लीनियर. लीनियर का मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हुआ? Yes, it is O of n time complexity. Don't forget that. It is O of n time complexity. Don't forget that. तो चलो, if you understand that, और by the way ये कोई नया वाला क्लास नहीं है. It is there like a Java 1.5. So काफी पुराना है, काफी पुराना क्लास है. वैसे कल एक गड़बड़ हुआ. कल रदर मैं आपको भी स्टैक क्यू ही पढ़ा रहा था, एंड देन अचानक से कोई तो वो पिछले बैच का एक स्टूडेंट था, उसने मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डाला, सर ऐसा कोड उसने दिया था, सर ये कोड है और इसका आउटपुट क्या आएगा. एंड दैट कोड वाज लाइक रिगार्डिंग द लाइक प्रायोरिटी क्यू का कोड था. इट वाज लाइक मोस्ट प्रोबब्ली ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर द जावा एमसीक्यू एग्जाम. तो कुछ तो क्वेश्चन था, तो मैंने उसको रिटर्न में मैसेज दे दिया कि प्लीज गो बैक एंड टेक अ लुक एट द स्लाइड्स. टेक अ लुक एट द स्लाइड्स. स्लाइड के ऊपर मैंने फंक्शन के नाम लिख के दिए हुए हैं. सो आई जस्ट आई थॉट दैट ही इज फ्रॉम योर बैच. और फिर सर आज हमारा कोई लेक्चर नहीं था. मेरे को याद आया तो फिर जाके मैंने ढूंढा, अरे ये तो ओल्ड बैच का बच्चा है. मैंने ठीक है, नो प्रॉब्लम. फिर मैंने वापस से उसको इसका स्क्रीनशॉट भेज दिया, जस्ट टू से दैट अच्छा दिस इज अवेलेबल एंड इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ लॉग इन. राइट, होता है ऐसे. अब कल गलती से मैंने आपको भी स्टैक और क्यू पढ़ा था, तो मुझको लगा कि आप में से कोई तो क्या कहते हैं उसको, ओवर एक्साइटेड होगा, जाके स्टैक और क्यू के सर ने स्लाइड दे दिया है तो करके देखते हैं करके, एंड देन समवन इज ट्राइंग इट. आई थॉट दैट. बाय द वे, यहाँ पर एक और क्लास जो ऐड करना चाहिए, इट इज प्रायोरिटी क्यू. very 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 important to remember all the time that priority queue is not first in first out queue. Priority queue is not first in first out queue. Please understand that. बाय द वे, उसने जो कोड मुझको भेजा था, मैं सोच रहा हूं मैं आपको करके दिखाऊं. ही वॉज एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर एमसीक्यू, और फिर वो नीचे बता रहा था कि नीचे 4 ऑप्शन है एंड देन व्हाट विल हैपन, काइंड ऑफ स्टफ. तो चलो हम लोग वही कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग आवर ओन प्रायोरिटी क्यू. वैसे भी हमको हीप नहीं आता है, वैसे भी हमको हीप नहीं आता है, तो जो रेडीमेड है उसी को यूज कर लेते हैं. जब हीप आएगा तब हम लोग, चाहो तो आप लोग हीप से इंप्लीमेंट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो प्रायोरिटी क्यू, मैं यहाँ पर खुद का प्रायोरिटी क्यू नहीं बना रहा हूँ, मैं जावा का प्रायोरिटी क्यू यूज कर रहा हूँ. इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू. न्यू क्लास, ओके, सनबीम प्रायोरिटी क्यू मेन. ऑल राइट. Next, priority queue, priority. How do I use it? मैं सिर्फ वही चेक कर रहा हूँ. Priority queue. Let us try to add integer. और उसने क्वेश्चन भी ऐसे ही कुछ भेजा था. New priority queue. New priority queue. Okay, good. And then I can try to add the element. यहाँ पर फंक्शन का नाम होता है offer. Offer is to add and poll is to remove. So offer. So let me offer. Let's say let me add. अभी जो मैंने ऐड किया था वही मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ. अभी जो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा था, ये क्या वैल्यूज में बता रहा था, मैं भूल गया. वैल्यूज गिवन, प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू. यस, 5962. सो द वैल्यू 5, I have added 5. Okay, 962, 962. And the question was that q dot is empty while q is not empty. You are trying to pop one by one q dot poll. यू क्यू डॉट पोल लिखो या क्यू डॉट रिमूव लिखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. अल्टीमेटली दोनों से आउटपुट वही आने वाला है. द क्वेश्चन वाज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस. एमसीक्यू क्वेश्चन वाज दैट, ये कोड दिया था और पूछा गया था व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस. कैन यू प्लीज टेल मी द आउटपुट ऑफ दिस. व्हाइल नॉट एम्प्टी लिखा है, मतलब सारे एलिमेंट डिलीट होने वाले हैं. So output should be 2569. Okay, you are saying so. Let us just check it whether it is 2569. Wow, kitne intelligent बच्चे आप. Okay, so whatever you are saying is absolutely correct. It is getting sort in the same order. It will get deleted.
anyway. So this is nothing but the implementation of a queue that is ready made, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये O of log n, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये भी O of log n है. हम लोग यहाँ पर O of log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉलो कर रहे हैं. ओके, दैट इज गुड. चलो, एनी क्वेश्चंस यू हैव रिगार्डिंग स्टैक्स एंड क्यूज, यू आर वेलकम. I'm saying any question you have regarding stack and queue, you are welcome. Like good time to ask. No questions? So should we move further? अरे आगे बढ़े क्या? I believe that stack और queue के हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है. मैं सोच रहा हूँ we will talk about some interview questions on stack and queue. I hope you will enjoy that. Right? Some interview questions of stack and queue, we'll talk about it. Someone is asking for Tower of Hanoi. To be frank, Tower of Hanoi is something up just a problem given so that your stack knowledge is clear. Already हम लोग यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे better problems कर रहे हैं. I don't think that unnecessary we should again go for Tower of Hanoi and waste our time. वैसे भी वापस से stack का knowledge आपको वापस से ट्री में लगने वाला है. In order, pre order, post order वापस से आपका होने वाला है. तो एट दैट टाइम यू कैन डू इट. और वैसे टू बी फ्रैंक, टॉवर ऑफ एनोई मैंने बचपन में पढ़ा था, उसके बाद में मेरे को भी याद नहीं है. इट इज ऑल अबाउट टू रिकर्सिव कॉल दैट यू आर मेकिंग, दैट्स इट. और वैसे सारे कॉल आपको प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्री में दिखाई देने ही वाले हैं, सो चिंता मत करना. राइट? तो अभी हम लोग आगे जाते हैं एंड विल टॉक अबाउट काइंड ऑफ अ टिपिकल इंटरव्यू.